to welcome ma'am. Sonia Garcha ma'am, she is our board member of Youth Aid Foundation, also a development professional. She has experience of over 3 decades in community and entrepreneurship development. She has a strong focus with the women entrepreneurship development, working in urban as well as rural area. She is also a member of CS Pathshala committee and strategy implementation for different around 1,000 rural schools across multiple states and serve as a steering committee chair for CTIS 2025. She is a mentor for us as well as all the grassroots entrepreneurs, women who are into the entrepreneurship. And extensively, she works with women fish vendors and street vendors and help them into the digital and financial literacy initiatives. She is a social innovation award winner and author as well as leader for digital empowerment of the unorganized sectors and entrepreneurs. I welcome you, ma'am, and hand over for the today's session, and then we can start the program. I also request everyone कि screen पे कोई भी मत लिखिए please. आपको जो भी लिखना है chat box में लिखिए. Thank you and welcome, Sonia ma'am. I hand over it to you. Yeah. So thank you so much, Josna, and a very warm welcome to everybody. और जैसे ज्योत्सना बता रही थी राइट कि हम महिला फिश वेंडर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो मैंने ज्योत्सना को वही बोला उस वक्त मैं हमारे धारावी के सेंटर में हूँ, तो एक्सक्यूज मी क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड आवाज रहेगी, हमारा रोटी मेकिंग यूनिट का कुछ इंस्टॉलेशन चल रहा है. बट मैं ये मतलब बट फिर भी मुझे ये सेशन होस्ट करने में बहुत ही दिलचस्पी थी बिकॉज अरिजीत का सेशन हम नहीं मिस करना चाहेंगे. तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी 5 दिन से हमारा सेशंस चल रहे हैं, तो आज का सेशन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. तो छोटा सा मैं अरिजीत का इंट्रोडक्शन करूंगी. आई हैव बीन फॉर्चुनेट दैट आई मेट अरिजीत एट द YESummit earlier, and Arijit is a globally recognized serial entrepreneur, technologist, angel investor, and a startup ecosystem builder with over nearly 3 decades of experience spanning technology, finance, innovation, and sustainable development. So he is a founder since 1998 and the CEO of Virtual Infocom, one of India's earliest and leading game developer blockchain. Right? I will not get into AI and deep tech and everything आप लोगों के लिए, बट मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि जो सारी बातें आजकल होती है राइट, पीपल टॉक अबाउट जेन एआई ये वो, और सबको दिलचस्पी होती है कि ये है क्या. सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव अ पर्सन हु हैज बीन पार्ट ऑफ दिस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड ऑल्सो he has been part of India's first Gen AI movie, right? So he's also a TEDx speaker. He has delivered over 2,100 talks globally and mentored more than 6,000 startups across countries. अब उनका जो एक्सपर्टीज है, गेम प्रोग्रामिंग है, वर्चुअल रियलिटी है, एआई एंड जेन है, ब्लॉकचेन, फिनटेक, हेल्थ टेक एंड इंडस्ट्री 4.0. He has closely worked with Fortune 500 companies, government bodies, universities, global institutions, including IITs, IIMs, ADB, and international business forums. So he is also the founder of the World Leaders Summit and Co-Innovate Ventures, and serves as a government advisor, jury member for National Startup Awards and Smart India Hackathon, and also the advisor to Global Diplomatic and Innovation Networks. और जो बातें शायद कम लोगों को पता है, तो ही इज अ ह्यूमैनिटेरियन एंड आर्टिस्ट, ऑथर, कम्युनिटी बिल्डर, and he continues to drive inclusive innovation, global collaboration, and technology-led impact worldwide. तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि और ज्यादा टाइम न लेते हुए कि we are very fortunate that we have Arijit with us. So over to you, Arijit. Thank you so much for being part of this masterclass, and I'm sure बाकी सब उत्साह से इंतजार कर रहे हैं आपकी बातें सुनने के लिए. Thank you so much. I believe that your mode of conversation, you will be looking for more Hindi or English. Which one you prefer?
Jyotsna, what do they Both. prefer? Hindi? Hindi and English mix. हाँ, इसलिए Because मैं we बोल have रही हूँ. South people as well as North states people, so if we can mix. No problem. Not a problem. So I have a very interesting subject. Hindi, I will try my best. I have a little bit of interesting subject. Thank you for the lovely introduction of mine. Really happy to come here and then share a little bit of small insights of mine, which whatever I can share with all the interesting people in the chat box, in the Zoom meeting. Just trying to understand आप लोग जहाँ से भी है, I'm sure साउथ नॉर्थ सब कुछ मिला के आपका एक इकोसिस्टम है. मेरा आज का टॉपिक बहुत सिंपल सा है कि हम जब भी बिजनेस करते हैं हम लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि अपना बिजनेस थोड़ा बड़ा हो जाए, है ना. फिर दूसरा अपना थोड़ा सोच आता है कि कहाँ से पैसा मिल सकता है. एक तो हो गया हम लोग सोचते हैं चलो क्लाइंट से कुछ हम लोग इनकम कर लेंगे, जो भी प्रॉफिट है उसको हम लोग मैनेज कर लेते हैं. और दूसरा हम लोग सोच रहे हैं कि अपना जो फैमिली है, फैमिली हम लोग चला लेंगे अपना बिजनेस के पैसे से. और तीसरा, कोई बैंक हमको फाइनेंस कर दे या फिर कोई प्राइवेट लेंडर हमको थोड़ा इन्वेस्टमेंट दे दे. तो मेरा आज का टॉपिक जो है दैट इज मोर ऑन creating a very structured company and how you can manage your finance well. अभी इसमें क्या है ना, मैं थोड़ा एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा आपको. तो मुझे लग रहा है कि आपको आसानी होगा काम करने में. ठीक है. ज्यादातर स्टार्टअप स्पेस में क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि अपने पास एक बहुत बढ़िया बहुत अच्छा एक आइडिया हो जाए तो कोई ना कोई इन्वेस्टर होगा जो हमको फंड कर देगा, इन्वेस्टर कर. तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ये कूल आइडिया में नहीं जाता हूँ, मैं थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया देता हूँ. ये मेरा एक स्लाइड है जहाँ पे शायद आपको दिख जाएगा कि कितना सारा न्यूज़पेपर में मेरा प्रेस न्यूज़ छप चुका है और कहाँ कहाँ पे मैं जा चुका हूँ. अप्रॉक्सीमेट 95 प्लस कंट्रीज का मेरा खुद का नेटवर्क है और मेरा वर्ल्ड समिट अभी 102 कंट्रीज के अंदर हम लोग काम करते हैं. तो मेरा जो सेशंस होता है यूजुअली ये वाला साइज होता है, देख सकते हो आप, है ना. कुछ 5-6 हज़ार लोग होते हैं और थोड़ा थोड़ा बड़ा, थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा कभी कभी जापानीज, कभी कभी कोरियन, कभी कभी रशियन, ये सब लोग मेरे सामने रहते हैं. तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है. आप लोग समझ सकते हो कि अ, अगर आप हिंदी भाषी है या फिर मान लीजिए आप बहुत दूर के हैं, मे बी यू आर स्पीकिंग इन तमिल और मे बी यू आर स्पीकिंग इन मलयालम, आप जहां से भी है, लैंग्वेज इज नॉट अ बिग बैरियर. शायद मैं इंग्लिश हिंदी मिला के आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो मिक्स एंड मोड कुछ भी हो सकता है. ठीक है. ये मेरा कुछ कंपनीज है जो मैंने चालू किया है और ये सक्सेसफुली रन कर रहा है. पिछले कुछ 27-28 साल हो गया है ये सब करने में. तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि ये जितना मैं कंपनी चलाता हूँ, जितने लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें बढ़िया दो चीज लगता है. एक है इनोवेशन, दूसरा है मनी. ठीक है. तो फाइनेंस ओरिएंटेड काम करने से पहले हमको जो सोचना चाहिए वो है, हम लोग एक कंपनी अगर चला रहे हैं कुछ भी, जैसे मॉडरेटर मैडम अभी आप लोगों को शेयर कर रहे थे, शी इज फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल एंड शी इज ट्राइंग टू मैनेज समथिंग ऑन रोटी मेकिंग मशीन. ठीक है. एंड देन प्रोबेबली शी इज वर्किंग विथ वुमन फ्रॉम फिशरीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई हार्ड इट राइट. ठीक है ना. तो हम लोग जैसे देखते हैं जब भी कोई भी ग्रास रूट लेवल हम लोगों के पास आता है या फिर कुछ भी कॉमन सा प्रॉब्लम लेके कोई भी आता है, बी दैट हैंडीक्राफ्ट्स, बी दैट प्रॉब्ली कोई अचार बना रहा है, बी दैट someone is working with maybe shalpata, probably some people are working with very very common thing like creating maybe a small stall or working with tea, even tea mix. ये जितने सारे हैं हम लोग पहले जो देखते हैं दैट इज बेसिकली ये क्या रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. अब रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या हो, मान लीजिए आपके इलाके में आप सोच रहे हैं कि चलो
मेरे आसपास में 50 किलोमीटर रेडियस में चाय मिक्स का कोई दुकान नहीं, तो मैं एक चाय मिक्स का दुकान लगाता हूं। ठीक है, तो उसमें क्या मुझे फाइनेंस मिल जाएगा? आंसर ये है कि उसमें कोई अगर इनोवेटिव कुछ प्रोडक्ट है, विच कैन बी प्रॉब्ली लाइक अ ब्लू टी, or it can be a complete green tea with honey, or it can be with jaggery with tea, proper tea, मतलब सिंपल डस्ट नहीं, और वो अगर स्केलेबल है तो उसमें फाइनेंस मिलने का चांस बढ़ जाता है और बढ़िया हो जाता है। अब ये जो हमारा डिमांड है, ये क्या बहुत ज्यादा है? यूजुअली ये जो लाइन मैंने लिखा है ना, द पेन इज अर्जेंट और नॉट, पेन डजेंट मीन आपके पास दर्द हो रहा है, पेन मतलब मार्केट में ये डिमांड है क्या। ज्यादातर जगह पे क्या हो रहा है, अगर आप फैक्ट्री बेस्ड एरिया में जाएंगे, मान लीजिए कोई स्टील प्लांट है या फिर कोई एल्यूमिनियम फैक्ट्री है, थोड़ा साइजेबल, थोड़ा बड़ा, उसके सामने अगर आप एक खाने का दुकान लगाएंगे, कैसी भी हो सकता है, इट कैन बी इवन गोलगप्पा स्टोर, इट कैन बी अ लंच बॉक्स यूनिट, या फिर आपके सामने कोई यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है बड़ा सा, उसके सामने वो लोकेशन में अगर आप कुछ डालेंगे खाने पीने का, यूजुअली चीजें बिक जाता है। तो अगर आपका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि मैं टारगेट करता हूं, मेरा जो फोकस एरिया है, मेरा फोकस एरिया एकदम स्पेसिफिकली आसपास का जितना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसी इंस्टीट्यूट के सामने मैं अपना स्टॉल ओपन करना चाहता हूं, तो ये एक आपका मार्केट ओरिएंटेड इनोवेटिव बिजनेस स्ट्रक्चर हो गया। मे बी आप जो खाना बेच रहे हो वो बहुत कॉमन है, हो सकता है आप सिर्फ इडली डोसा दे रहे हो, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। और ये इडली डोसा बहुत कॉमन टाइप है, कोई आप ज्यादा उसमें मसाले का कोई वैरायटी नहीं है, सिंपल डोसा, सादा खाना, सादा इडली उसके पास बिक ही जाता है। ये अगर आपका स्ट्रक्चर है, लेकिन आपके सामने जो मार्केट आप टैप कर रहे हो वो शायद स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग या ऑफिस गोइंग, ऐसा कोई मार्केट इलाका है, तो ये आपका मार्केट एंट्री पॉइंट बहुत बढ़िया हो गया। उसमें क्या हुआ, हम लोग पहले ही सोच लिए कि मेरा कस्टमर कौन है। ठीक है, तो मैं टैप कर रहा हूं जो फैक्ट्री गोअर्स है, या फिर मैं टैप कर रहा हूं जो छात्र है वो, तो दोनों में अंतर क्या होगा? मान लो मैं एकदम सिटी के अंदर मैंने एक स्टोर खोला है, मैं बहुत कॉमन बिजनेस का एग्जांपल दे रहा हूं, चलो डोसा स्टोर, ठीक है। सिटी के अंदर मैंने एक स्टोर खोला है, बहुत ज्यादा हाइजीनिक है, बैठने का जगह है, और एसी लगा हुआ है, मेरा कुछ 8-10 एम्प्लॉय उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ दैट डोसा विच विल बी लाइक साइजेबल, मे बी अ पेपर डोसा, कैन बी अप टू 110 रुपीज टू 200 रुपीज। बट वही चीज अगर हम लोग लेबर क्लास के लिए बना रहे हैं, या फिर वही चीज अगर हम स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, वो प्राइस सेंसिटिव हो गया, मतलब ये बहुत ज्यादा प्राइस वाला चीज हो गया। बिकॉज एज ए स्टूडेंट दे विल ऑप्ट फॉर फूड विच इज विद इन 50 रुपीज, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप डोसा भी बना रहे हो, तो डोसा का सेलिंग प्राइस कुड बी विद इन INR 50। तो ये पहला सीख हमको क्या मिला, हु इज योर फर्स्ट कस्टमर, हम किसको बेच रहे हैं। क्या मैं प्रीमियम क्वालिटी बेच रहा हूं, क्या मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड जगह बना के फिर मैं बेचने का कोशिश कर रहा हूं, या मैं वॉल्यूम गेम खेलूंगा और मेरा टारगेट जो है वो वॉल्यूम ही है, मुझे नहीं चाहिए वो लग्जरी वाला कस्टमर, मुझे चाहिए ही नहीं, जरूरत भी नहीं। ये वाला बिजनेस में क्या होता है, आपका कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो यूजुअली कम नहीं होता है अगर आपका क्वालिटी है तो। लेकिन अब बड़ा रेस्टोरेंट अगर आप देखेंगे जिसका मान लो एक डोसे का सेलिंग प्राइस 250-300 रुपीज है, उसका टारगेट एरिया ही अलग है। तो क्या मैं अपना जो स्टॉल है वो शायद टारगेट ओरिएंटेड फॉर स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा ज्यादा इनोवेटिव कर सकता हूं? कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग अ स्केलिंग फ्रॉम डे वन। दैट मीन्स
मेरा आइडिया ऐसा हो सकता है कि जब मैं डोसे का स्टॉल डाल रहा हूं, तो अगर मेरे सामने यूनिवर्सिटी है, एक तो हो गया दिन में मैं उसको जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उसको मैं सर्व कर रहा हूं। दूसरा ऑप्शन है, कैन आई क्रिएट अ ऑनलाइन डिलीवरी मैकेनिज्म। जो नॉन ऑनलाइन डिलीवरी मैकेनिज्म है उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, उसमें कॉस्टली ज्यादा हो जाएगा। क्या मैं खुद का एक ऐप लॉन्च कर सकता हूं, या फिर खुद का एक मैकेनिज्म लॉन्च कर सकता हूं, जो बोर्डिंग के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनको एक फैसिलिटी देगा लेट नाइट खाने का ऑर्डर देने में। नाउ दिस इज अ रियल प्रॉब्लम। ओके, आई एम नॉट श्योर आप लोग कितने इसमें डीप गए हैं। इफ यू लुक एट एनी NITs or IITs or even any normal universities or normal college, which can be anything, it can be a private college as well, आसपास में यूजुअली स्टूडेंट्स पेइंग गेस्ट लेके रह जाते हैं। उनके लिए एक चैलेंज ज्यादा है कि वो लोग लेट नाइट जग के वो लोग मतलब पढ़ते हैं, और कभी कभी उनको भूख लगता है, so they usually go for Maggie. So if that particular store says, yeah, I'll be creating something which is completely a healthy food, मतलब मुझे वो कचरा खाना स्टूडेंट को नहीं खिलाना है, मैं रात को लेट नाइट को उनको हेल्दी फूड खिलाऊंगा। इट कैन बी अ उपमा एज वेल, right? It can be a very healthy, high protein with maybe chickpeas dust with maybe some kind of chutney. It can be anything. It can be very nutrition oriented food. That becomes a scalable business. उसमें ज्यादातर यूजुअली फंडिंग का ऑप्शन आपका बढ़ जाता है। कौन सा वाला फंडिंग? इसमें आ गया आपका यूजुअली एंजल इन्वेस्टमेंट वाला फंडिंग। मतलब जितने सारे एंजल इन्वेस्टर दे थिंक दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज स्केलेबल, इसको मैं रिप्लिकेट कर सकता हूं दूसरा कोई जगह पे। मतलब मान लीजिए आप नागपुर में चला रहे हो, वही चीज शायद आप मंडी में चलाओगे, या फिर आप नॉर्थ दिल्ली में चला रहे हो, वही सेम चीज आप एकदम गुड़गांव गुड़गांव में चलाओगे। ये सारे जो स्ट्रक्चर है, तो मैं आसानी से आपको बोल दिया कि चलो ठीक है ये नॉर्थ दिल्ली में चलेगा, इसको मैं गुड़गांव में लेके जाता हूं। स्टैटिक चैलेंजेस क्या है? आपका खुद का रॉ मटेरियल, रात का डिलीवरी। तो रात में अगर आप लोग डिलीवरी कर रहे हो, उसमें अगर आप 5 रुपए ज्यादा कॉस्ट भी डाल रहे हो ना, पीपल आर हैप्पी टू पे नाउ इट इज। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली योर स्केल अप अपॉर्चुनिटी। एक शहर के अंदर आप कितने कस्टमर लेके कैसे आप किस तरीके से आप बेच रहे हो। मतलब ये आपका जो प्रोडक्ट है, ये एकदम कोई इंटरेस्टिंग डिस्ट्रप्टिव नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन ये स्केलेबल होना चाहिए। ठीक है, स्केलेबल मतलब क्या हुआ, जो मैंने अब तक समझाया कि चलो मैं नॉर्थ में चला रहा हूं, उसी को मैं साउथ में चलाऊंगा, और वहां पे मेरा सेम क्वालिटी सेम टेस्ट और मैकेनिज्म मेरा सेम होगा। तो इसमें क्या हो गया, आप मान लो मैं खाने का एग्जांपल दे रहा था अब तक, अभी चलो थोड़ा दूसरा एक आपको आइडिया देते हैं एग्जांपल की तरह। जस्ट जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल बिट ऑफ एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे मैं जो लोग हेवी वर्कआउट करते हैं उनके लिए हम लोग ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ठीक है, और वो ब्रेकफास्ट कोई आपका प्रोसेस्ड फूड नहीं होगा, कंप्लीटली ऑर्गेनिक फूड होगा, और वो डिलीवरी मैकेनिज्म का मुझे एक स्टार्टअप करना है। मतलब मैं खुद एग्रीकल्चर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं गांव में गया, मेरे पास एक्सेस है, मैं कुछ आसपास के फार्मर के साथ मैंने बात कर लिया, और जितने सारे फार्मर हैं उनको मैंने एक सिंपल तरीके से समझाया कि चलो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो अपना खाना बचता है, जो हम लोग बना रहे हैं, उसी का हम लोग बल्क में खरीद लेंगे। नाउ फॉर एनी वेजिटेबल, इफ इट इज अ पेरिशेबल वन, पेरिशेबल मीन्स वो ज्यादा दिन रहता नहीं है, खराब हो सकता है, तो उसका सेल्फ लाइफ जो है, वो शेल्फ लाइफ मान लीजिए 2 दिन का है, उससे ज्यादा नहीं है, मान लीजिए एग्जाम्पल की तरह ले लेते हैं ऐसे। लेकिन अगर हम लोग सीड में जाए, सीड का पेरिशेबल लाइफ ज्यादातर बहुत आसान तरीके से 1 महीना तक चल सकता है। जैसे आप
पंपकिन सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया। तो मैंने शुरू किया था आपको हेल्दी कोई मैं ब्रेकफास्ट दूंगा, राइट। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट के अंदर इफ यू लुक एट सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, and you combine probably a little bit of more nuts, peanuts, hazelnuts, ड्राई फ्रूट्स जो सेगमेंट है उसमें जाते हैं, और उसके साथ हम लोग एक सैंडविच में चले जाते हैं, नॉन वेज में नहीं जाते हैं, ठीक है। सैंडविच में चले जाते हैं जिसमें मैं प्योर गाजर, टमाटर, थोड़ा बीटरूट और लेटुस ये लगा के या खीरा लगा के मैं एक एकदम ओट से बना हुआ जो रोटी है या रागी से बना हुआ रोटी है, बजरे से बना हुआ कोई रोटी है, उसके अंदर एक होममेड सॉस लगा के मैं एक ब्रेकफास्ट बना के मैं डिलीवरी कर रहा हूं। नाउ दिस स्मॉल थिंग लुक्स वेरी वेरी टाइनी, वेरी वेरी कॉमन, बट दिस बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग breakfast for anyone who is going for gym or heavy workout or probably who is health conscious. अब मैं ये एग्जांपल आपको क्यों दे रहा हूं, ये सारे बिजनेस जो है शुरू करना आसान है, चलाना बहुत इजी होता है, वॉल्यूम गेम में आप लोग खेल सकते हो, और इसमें आपका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको क्लैरिटी आ जाता है कि भाई मेरा रेवेन्यू किस तरीके का आएगा। मतलब पहला पॉइंट मैनेजमेंट के टर्म के हिसाब से हम लोग बोलते हैं क्लियर यूनिट इकोनॉमिक्स, दूसरा हम लोग बोलते हैं लॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, राइट। अब ये क्लियर यूनिट इकोनॉमिक्स क्या हुआ, जो मैंने अब तक समझाया ना उसमें इसको छोटा सा आप तोड़ दो पूरा चीज को। मान लो अपने पास सेलिंग प्राइस जो है वो, मैं एक ब्रेकफास्ट का जो प्लेट है मैं सेल कर रहा हूं 120 रुपए में पूरा प्लेट, ठीक है, या फिर हम लोग 80 रुपए में बेचेंगे, तो मैं बैक कैलकुलेशन करना चालू करूंगा। मुझे अगर 80 रुपए में बेचना है तो इसमें मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, क्या मैं 10% प्रॉफिट करूंगा, मतलब 8 रुपए मेरा प्रॉफिट है, या मैं 30% प्रॉफिट कर रहा हूं, मतलब 24 रुपीज मेरा प्रॉफिट मार्जिन है। तो मुझे अगर 24 रुपीज प्रॉफिट मार्जिन करना है तो मैं क्या क्वालिटी सेम, स्ट्रक्चर सेम, क्वांटिटी सेम दे के मैं डिलीवरी कर सकता हूं। उसमें मेरा कितना लेबर लग रहा है, मेरा आने जाने का खर्चा कितना हो रहा है, मैं अगर डिलीवरी दे रहा हूं डिलीवरी का खर्चा कितना हो रहा है, और मैं कितना रेडियस के अंदर में काम कर रहा हूं, इज इट विद इन अ रेडियस ऑफ 50 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, या फिर 100 किलोमीटर्स। मेरा अगर यूनिट इकोनॉमिक ये बैठता है कि मैं 100 किलोमीटर के अंदर 80 रुपए में ये मैं डिलीवर करूंगा और मेरा प्रॉफिट बचेगा 20 से 30%, दैट बिजनेस इज गुड टू गो इन द मार्केट, ठीक है। तो मेरा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में मुझे समझ में आ गया कि मुझे कितना कितने में बनाना है, कितने में बेचना है, आसान है समझना। अब मुझे इसको अगर स्केल अप करना है तो कभी मुझे लग सकता है कि मेरा अगले 100 किलोमीटर में या अगले 50 किलोमीटर में इसको मुझे अगर करना है तो मैं कैसे करूं। एक होगा जहां पे मैं बना रहा हूं वहीं से मैं 200 किलोमीटर दूर डिलीवर करूंगा, मतलब 100 + 100 दैट बिकम्स योर 200 किलोमीटर्स। उसमें क्या मेरा प्रॉफिट मार्जिन सेम रहेगा, ऑब्वियसली नहीं, हो नहीं सकता है। आप अगर डिलीवरी दे रहे हो 100 किलोमीटर के अंदर, उसको बढ़ा रहे हो आप मान लो और 50 किलोमीटर ज्यादा, तो आपका पेट्रोल खर्चा हो सकता है या फिर कुछ भी मैन पावर का खर्चा हो सकता है, कॉस्टिंग सेम नहीं हो सकता। सो शैल आई स्टार्ट another store in every 100 kilometer? That becomes your calculation model. वो करने के लिए मुझे क्या फंडिंग चाहिए, क्या उसमें मुझे मिल सकता है कोई लोन या फिर कोई ग्रांट या फिर कोई हेल्प या फिर कोई सपोर्ट, मिल सकता है। बैंक हो गया एक, ज्यादातर बैंक आप लोग बोलेंगे बिना कोलेटरल काम नहीं करता है, डेफिनेटली काम नहीं करेगा, लेकिन कुछ कुछ बैंक है आज इंडिया के अंदर मुद्रा लोन आसानी से देते हैं। दूसरा, डिपेंडिंग ऑन योर सिविल स्कोर, आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टैंड सिविल स्कोर और नॉट, डिपेंडिंग ऑन योर सिविल स्कोर दे यूजुअली गिव यू गुड नंबर ऑफ लोन। एक हो गया आपका एग्जाम्पल की तरह अगर आप देखेंगे यूको बैंक हो गया, एसबीआई देता है, इंडसइंड बैंक प्राइवेट के हिसाब से अगर मैं बोलूं, इंडसइंड बैंक ऑल्सो
gives the same similar kind of advantage mechanism. Even there are multiple more microfinance banks also who are giving microfinance loan as well. डिपेंड्स आप कैसे अपना पेपर वर्क सजाते हो, वो एक सेशन में बहुत मुश्किल है जेनरिक करके वो बोलना। इसमें एक बड़ा पॉइंट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड कैक। आसान है, कैक मींस कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ये मैं अगर कैलकुलेट कर पाऊं और अपने पास अगर सामने मुझे दिख रहा है कि एकदम क्लियर पाथ है और मेरा प्रॉफिट रेशियो मैं सेम रख सकता हूं, तो ये मिलना आसान हो जाता है आपका, लोन बोलिए या फिर इन्वेस्टमेंट बोलिए, और उसको मैनेज करना भी आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होता है। अभी इसके अंदर दूसरे तरीके का बिजनेस मैं आपको समझाता हूं। अब तक मैं बोल चुका, चलो नॉर्मल फूड का बिजनेस, नॉर्मल डिलीवरी मैकेनिज्म विथ इंटरेस्टिंग हेल्दी ब्रेकफास्ट। अब आते हैं शायद आप में से कोई या फिर यंगस्टर्स, they are thinking that I'll be creating an app and that app will probably attract a lot of investor and I'll make money. True, agree. वो इंडिया में कभी होता था, मतलब बहुत पहले आप ऐप बनाते थे, आइडिया अच्छा था, इन्वेस्टर उतना वो स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं थे मार्केट में, आई वुड से। बट नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट, नाउ इन्वेस्टर्स आर स्मार्ट, दे आल्सो रीड, दे आल्सो अंडरस्टैंड। So a traditional business owner as an investor, their second generation is also reading and thinking and defining things very very prominently. ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? अगर आपका कोई ऐप आपने बनाया है और उसमें 10,000, 20,000, 1 लाख फ्री यूजर है और आप सोच रहे हैं कि उसमें मुझे इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, मुश्किल है। Free users are users. They are not your customer. They are not paying your bills. They are not paying for anything. They are just enjoying free service. So free service लेने वाले को हम लोग कभी कस्टमर नहीं बोलते हैं, वुड बी कस्टमर बोलते हैं, मे बी। तो ये 10,000 में से क्या मैं 10% पेड कस्टमर मुझे मिला या मिल सकता है, तो ही यूजली वो वाला बिजनेस इन्वेस्टेबल होता है। थोड़ा समझ में आया? चलो, अब इन्वेस्टर के हिसाब से हम लोग क्या देखते हैं? यूजुअली फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव हम लोग सोचते हैं कि मेरा सामने जो फाउंडर है वो मेरा पहला वाला इन्वेस्टमेंट है। आई एम सो सॉरी, कुछ हो गया, एक सेकंड रुको, फिर से शेयर करने दो। या तो इसमें हम लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों ने पिच डेक बनाया, आपने बहुत अच्छा एक सीए को हायर किए, सीए टुक प्रोबेबली 25,000 to 50,000 रुपीज टू क्रिएट अ वेरी गुड प्रोजेक्शन। फिर आप लोग आ रहे हैं कोई प्राइवेट इन्वेस्टर के पास, बट प्राइवेट इन्वेस्टर बोल रहे हैं कि भाई हम पिच डेक देख के आपको पैसा क्यों दें, अगर हमको आपको पे ही करना है देन विल बी थिंकिंग ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड यू मतलब जो फाउंडर होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली जब भी हम लोग कोई भी फाउंडर आता है, हम लोग कुछ 4-5 उसका गुण देखते हैं। जैसे होता है ना, शादी से पहले एक लड़का या लड़की का गुण देखा जाता है, हम लोग वैसे ही देखते हैं। पहला, जो उसका सोच है, उसका क्लैरिटी कितना है, एकदम फोकस्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, या 50-60 आइडिया लेके दिमाग में बैठा है और उसमें से 2 आइडिया हमको पिच कर रहे हैं। एक से ज्यादा आप आइडिया पिच कर रहे हो मतलब आप फोकस नहीं है। लेकिन अगर आपका एक ही बिजनेस है, उसमें आप एक ही बिजनेस में फोकस कर रहे हो और उसी को आपको बड़ा करना है, तो यूजुअली थोड़ा हम लोग समझ जाते हैं कि इसका माइंडसेट क्या है। दूसरा बड़ा जो ऑप्शन है, इज ही कोचेबल, मतलब क्या हम लोग उसको सिखा सकते हैं, वो क्या सीखने के लिए राजी है, ओपन है माइंड, या फिर उसको लग रहा है कि मेरा बिजनेस मुझे आता है, आप तो सिर्फ पैसा दे दो बस। तो ये एक माइंडसेट दूसरा है। तो कोचेबिलिटी विदाउट कंफ्यूजन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड रेयर कॉम्बिनेशन, एटलीस्ट इन द फाउंडर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, क्या वो
जो भी काम कर रहा है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी स्टार्टअप, क्या वो अपना प्रेशर लेके वो एग्जीक्यूट कर सकता है? क्या उसका बैकबोन बहुत एथिकल है? ओके, आई विल गिव यू अ लाइव एग्जांपल व्हाट डू आई अंडरस्टैंड अबाउट एथिक्स एंड एथिकल। देखिए, मेरे सामने लगभग हर रोज, अगर मैं मिनिमम बोलूं तो 25 से 30 स्टार्टअप आ ही जाते हैं पिच करने के लिए। सर मुझे ये हेल्प चाहिए, आपका गाइडेंस चाहिए, मेंटरिंग चाहिए, या फिर फंडिंग चाहिए, जैसे भी हो आते हैं वो। मैं आपको एक अनएथिकल एग्जांपल देता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, सो दैट इट डजंट हर्ट एनीवन। सो दैट टीम फ्रॉम सम पार्ट ऑफ इंडिया, इवन मैं स्टेट का भी नाम नहीं लेता हूं, दे वर पिचिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है? तो उन्होंने बिजनेस प्लान बोला कि सर, जितने सारे दुकान है वहां पे जो मसाले होते हैं ना, जो खाने का मसाले, मतलब आप जब कुकिंग करते हो, कुकिंग का जितने मसाले होते हैं, वो मसाले एक्सपायर करने से 1 महीना पहले या फिर 15 दिन पहले हम लोग दुकान से उठा लेंगे, क्योंकि अगले 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर वो मसाले तो एक्सपायर हो जाएंगे, तो फेंकना पड़ेगा। तो फैक्ट्री से भी वैसे ही मसाले हम लोग उठा लेंगे जो एक्सपायर होने वाले हैं, उसको हम लोग रीपैक करके मार्केट में बेचेंगे। तो अपना जो मसाले का खर्चा है वो तो एकदम रद्दी के भाव आ गया, लेकिन हम लोग पैकेजिंग इतना अच्छे तरीके से करेंगे कि मार्केट में वो बिक जाएगा। तो मैंने बहुत सीधा सा एक आंसर दिया था उन लोगों को कि नेवर एवर पिच दिस काइंड ऑफ थिंग्स टू एनी ऑफ द investor, not even think of creating such kind of business. Now this is called basically investing in the ethical way towards business. अब आप सोचिए, थोड़ा हम लोग शिफ्ट करते हैं माइंडसेट, आपका थोड़ा लगाते हैं कि एज अ गुड इन्वेस्टर हम लोग कैसे इन्वेस्टेबल बिजनेस को देखते हैं। मनी मेकिंग प्रोसेस अगर हम लोग देखेंगे, अच्छा है, एक्सपायर करने वाला जो मसाले है उसको मैं रीपैक करके मार्केट में बेच रहा हूं, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन खतरनाक हो जाएगा। लोग शायद समझेंगे लेकिन नहीं, लोग वो खरीद लेंगे मसाले और वो कुक करके रेस्टोरेंट में वो लोग चला ही देंगे। मान लीजिए हम लोग घर में ना चलाए, लेकिन रेस्टोरेंट्स या फिर होटल्स वहां पे वो बेच ही सकते हैं चीजें। अब इसका इफेक्ट देखिए, जब आप हम लोग खाना खा रहे हैं, हम कभी सोच नहीं पाएंगे कि इट इज अ एक्सपायर प्रोडक्ट, उससे बना हुआ खाना आ रहा है मेरे सामने, बिकॉज वो गार्निश वार्निश करके बहुत अच्छे तरीके से आपको पेश किया जाएगा, बैकएंड का आप लोग नहीं देख रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली यू आर प्रोबेबली किलिंग मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल बाय वर्च्यू ऑफ क्रिएटिंग अ बिजनेस स्ट्रक्चर। ये वाला ज्यादातर, मैं आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूं, ज्यादातर ऐसे बिजनेसेस बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स कभी फंड नहीं करते हैं। बैंक तो भूल ही जाएगा, बैंक तो कभी करेगा नहीं, ठीक है? सो थिंक ऑफ अ बिजनेस वेयर योर एथिक्स टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी शुडंट गो कंप्लीटली अवे। और एक मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं, शायद आप लोगों ने देखा होगा, आई एम नॉट श्योर। इंडिया में कभी आपने सुना है कि एक्सपायर किया हुआ जो चॉकलेट्स है शॉपिंग मॉल से वो उठाया जाता है एंड देन उसको रीपैक करके फिर से वो बेचते हैं मार्केट में? चॉकलेट्स यूजुअली बच्चे खाते हैं। नाउ कैन यू थिंक ऑफ creating such kind of business and then saying that this is going to be a profitable business, right? So this is something which is a big no from good investors perspective, ठीक है? अब गुड इन्वेस्टर अगर आपके पास आता है, दे यूजुअली थिंक ऑफ अ लॉन्ग टर्म स्टैमिना, एंड दोनों का जेल टुगेदर हो रहा है नहीं हो रहा है वो लोग देखते हैं। जेल टुगेदर मतलब दोनों का माइंडसेट मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या एकदम सेम तरीके से दो लोग सोच रहे हैं वो देखना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है थोड़ा। तो अगर आप सोचेंगे कि आज अरिजीत सर बोल रहे हैं फंडिंग के लिए सेशन ले रहे हैं, और मान लीजिए हम और आप कभी कहीं पे मिल गए, एक बार दो बार हम लोग बातचीत कर लिए और फंडिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, टेक्स टाइम। एक ट्रस्ट बिल्ड करने में
टाइम लगता है। इसलिए जब आप ये समिट के थ्रू आ रहे हो, ये ट्रस्टेड एक प्लेटफॉर्म बन गया। सो यूजुअली बाय वर्च्यू ऑफ ट्रस्ट, मैं भी अगर किसी को देखता हूं तो मैं देखता हूं कि हाँ मैथ्यू जी के वहां से आ रहा है, तो मतलब एक फिल्टर होके आ रहा है मेरे सामने, ठीक है ना। तो जब भी आप ऐसे कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रहे हो, या फिर हमारा खुद का एक प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड लीडर समिट करके, थोड़ा साइजेबल लोग आते हैं वहां पे। दुबई में हमने किए, अफ्रीका में कुछ कुछ कंट्रीज में हमने ऑफलाइन किए, इंडिया में हम लोग अभी 3 जगह पे कर चुके हैं नेटवर्किंग समिट्स। तो उसमें भी हम लोग वही करते हैं कि एक ट्रस्टेड जोन बन जाए। सो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, बिल्डिंग ट्रस्ट इज अ बिग फैक्टर। जैसे आप लोग बैंक में जाते हो ना, बैंक का मैनेजर के साथ आप लोग बात करते हो, वहां पे एक ट्रस्ट जोन आप लोग क्रिएट करते हो, ताकि एक एटलीस्ट जान पहचान बन जाए, आप एक गुड कस्टमर हो उनके लिए। सो दोज थिंग्स, दोज स्मॉल थिंग्स मैटर्स अ लॉट, ठीक है। और जब भी आप अपने बिजनेस के बारे में बोल रहे हो ना, उसका कुछ कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा। पहला बात है, आपका ट्रैक्शन जरूरी है। अब ये शायद कुछ कुछ इंग्लिश टर्म मैं यूज कर रहा हूं, आसान कर देता हूं इनके लिए। ट्रैक्शन मतलब आप कितना बिजनेस कर रहे हो, कितने वॉल्यूम का बिजनेस कर रहे हो। इट कैन बी 10 lakhs, इट कैन बी 1 crore, इट कैन बी इवन 10,000, डजेंट मैटर। बट जो भी आप कर रहे हो, वो एकदम क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं महीने में, चलो मान लेते हैं 1 करोड़ का बिजनेस करता हूं, ठीक है, लेकिन मेरे पास साइंड एलओआई है कुछ 5 करोड़ का। एलओआई मतलब कौन बोल सकता है? चलो फटाफट गूगल करो, गूगल बाबा है आपके पास। व्हाट इज एलओआई, हु कैन टेल मी? चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी, मैं बहुत सारा नाम देख रहा हूं वहां पे। अच्छा, इंग्लिश प्लीज। या आई कैन गो विद इंग्लिश, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट द request was actually to combine English and Hindi. It is more convenient for me to be in English rather than Hindi. Okay, so traction is basically the proof. Now, what is active pilot? What is strategic partnership? What is repeat customer? These are very, very simple things. So, if we look at any kind of business, and there we get probably a month, we have a turnover of maybe 10 lakh rupees, and then there we can see somewhat from some company, they are giving them a project order, making a statement that they have got a 20 lakhs project order. Now they have to execute. Now, if they have that kind of signed LOI, letter of intent, that they will get a 20 lakhs business, then it becomes very easy from the investor perspective that the money will be there. 20 lakhs ka money will be there. So if to execute that, they need a total amount of 15 lakhs to maybe 18 lakhs. It's a very, very common structured proposition for an investor to invest in such kind of business. So this is an advantage. Any one of you who have got probably a bit of traction in their business would be a very good opportunity to pitch in front of structured investors who would be able to give you money, right? Is your entire traction have got some strategic partnership? For an example, we are partner of several different MNCs in the market, right? So is your business got some kind of partnership? So I was giving an example of maybe a chain of food store in front of the university or the colleges, right? Now it might happen that you have got some amount of partnership with the college itself, or maybe within the college primitive, you are running that canteen. That means you have a strategic partnership with an existing client. Now, is this college repeating the order? And then can you replicate the same kind of business to some other colleges? Then this is called a measurable adoption of your entire business mechanism. If that is happening, this business becomes a fundable business. That means what is happening, we can show, and it is not just a bluff and talking that what will happen next. Another very important aspect to make a fundable business is not running a company as a
individual person. That means you might be an individual founder initially, but then sequentially when you grow, when you want to scale it up, you should have at least another co-founder or a very good team with you. Team doesn't mean employees. Okay, I'll first define what is fundable companies, employee and team difference. Team is such where these people are working with you because of your vision, because of your thought process, because of your mindset. Okay, they are not with you because how much salary you're paying. Employees are people who are working with you for the salary that they are getting, which is completely fine. Employees are required. But from the investor's perspective, we always try to see that do you have a team who is a very trustable team, who trust each other, can collaborate with each other, can handshake with each other, can they trust others? Okay, live example. If from this platform, Mathuji says that, Arijit, see, can you take this session 1, 2, 3, 4, 5, whatever may be the time duration. I usually say yes. Why? Because there is a trust factor. So if you look at from the perspective of maybe third person perspective, they might think that, Arey, these two guys are going very well. They are like, supporting each other. So this is called a very good team bonding. थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं ऐसे, है ना? Now it might happen that in your company you have some kind of people like this. If not, try to get that done. That always attracts any of the investor, be that bank, be that government, be that grant, be that VCs, be that PE, be that probably an individual angel investor, right? This is mostly for the startups in the new world, wherein usually I recommend that you should be able to talk about your business in 30 seconds. Okay. To be very honest, maybe I'm a humble guy, right? I will probably remember your face, but I may not remember what you do until unless in 30 seconds time, you are able to talk about your business in proper segment, right? What do you do? For whom you are doing it? Why you and why now? The last point is most important point. Remember we had COVID times, right? So many of ventures, they shifted from manufacturing plastic to manufacturing masks, right? This is called why now. That means अभी क्या चल रहा है मार्केट में, डिमांड किसका है. If I'm doing a generic trading, okay, एक live example दे रहा हूं. I remember that madam was talking about she is working very deeply with women from fisheries industry, right? And that's a very ongoing, continuous process-oriented structure. In India, we have a large scale of people, not only women, large scale of people, maybe from Maharashtra. If we look at the coastal island areas, they usually go for fishing and process it and then sell it in the market. There are 3 layers. There is a 4th layer also, who usually work with the processed fish, package it, and then export it. Now, this is interesting. If you look at the global phenomena at the moment, in a lot of the cases, a lot of the scenarios, demand for fast food and demand for healthy food is increasing. Now, if I look at dry fish as a product, sometimes in open market, it doesn't look very hygienic. ठीक है, बहुत हाइजीनिक मुझे नहीं लगता है वो लोग. अगर आप उनके पास जाएंगे, बास आता है. अगर आप उनको देखेंगे तो शायद एक बल्ब जल रहा है, एक दुकान है, उसके ऊपर सजा हुआ है बहुत सारे मछली. ड्राई फिश का मैं मार्केट का बात करता हूं. अभी सेम चीज देख लीजिए, अगर हम लोग सुपरमार्केट में जा रहे हैं, पैकेट किया हुआ है ड्राई फिश, उसके ऊपर अच्छे तरीके से आपका लिखा हुआ है कौन सा फिश है, उसका कैलोरी वैल्यू क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर कितना है, विटामिन का कॉम्बिनेशन उसके अंदर क्या है, और ये दिखने में अच्छा लग रहा है. यूजुअली पीपल गो फॉर दैट.
And that kind of product is 100% you can go for export. But there are certain number of rules you need to follow. There is a licensing factor. There are food license, there is a process one, there is a tagging, there is a huge number of structure-oriented programs. So these things we usually think of as a scalable market from maybe India to outside of India. It can be within India as well. For an example, from coastal area, somebody saying that I have got some interesting fish from Goa, and I don't want to, send it like with ice and then go to your kitchen with that particular structure. आसान करते. I'm sure lot many of you know कि जब हम लोग मछली पकड़ते हैं ना, उसके बाद हम एक ठंडा जगह पे उसको रखते हैं हर बार. We usually put that in a cooling system. We freeze it. Then we take it out. With that mechanism, that particular tons of fish, it comes to a fish mandi. From fish mandi, it get distributed. From that distribution model, there are some local vendors who picks it up on the top of ice. It comes to a local bazaar, and from that market, local market, people buy it. So none of us can say we are actually buying fish fresh if it's a coastal island seafood, right? From the city's perspective, it's a distance of 300 kilometers. You cannot say within 300 kilometers, सुबह का मच्छी हम शाम में खा रहे हैं. नहीं हो रहा है. नहीं होता है. Let's accept that fact, right? Can you come in between? Can you create it on a process oriented one? जो harmful chemical हम लोग उसके अंदर डाल रहे हैं, वो हटा के क्या हम लोग उसको एक प्रोसेस में डाल सकते हैं जहां पे थोड़ा हेल्दी मटेरियल उसके अंदर डालें. देयर आर सम ऑफ द materials which is available in the market. Unfortunately, those materials are lying in the lab. Lot of university professors, they have created that. वो कभी industrialized नहीं हुआ आज तक. But can we create a mechanism जहां पे वही चीज हम लोग पैकेज करके लोगों के पास या बिजनेस के पास ले जा सके? That becomes basically a need of the hour. अभी मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं? बिकॉज अभी पूरा दुनिया में अगर आप देखेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्दी फूड, हेल्दी लिविंग. वी आर टॉकिंग अबाउट वी बिकम सो टॉक्सिक. तो चेंज करो. जितना अपना फर्टिलाइजर लगा के जो अपना फार्मिंग हो रहा है उसको हम लोग ऑर्गेनिक करते हैं, और ऑर्गेनिक फूड का डिमांड अभी दिमाग इस पे बढ़ रहा है, पूरा मार्केट में बढ़ रहा है. So this factor is there. So people who are from the grassroots level and they have the access, it's a big advantage for all of you, right? And this can be a scalable business for any one of you. I can go on like if you have a local dominance, you have a global scalability. This is a very powerful combination. So I know one gentleman from last YESummit. I met that guy. Beautiful, energetic gentleman. He started a tea mixing store specifically near Maharashtra. Very humble, very, very nice guy. Till date, we are in touch. We never did, any professional engagement, but I love him as a younger brother. So from Maharashtra, that fellow is now selling his tea in Dubai. So nothing is impossible. You need to understand that, right? He was watching me very rigorously. He was asking me, sir, you go to Dubai quite often. What are the opportunities? मैंने सिर्फ उसको यही बताया कि अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, कहाँ पे आप जा सकते हो, किस तरीके से आप कर सकते हो. बाकी उसने खुद किया. So as an entrepreneur, if you guys are working, you have all the capabilities. You just need a small bit of baby steps and you can walk it. It's not a big deal, not a rocket science. So if Bapurao can do it, his name is Bapurao Narute. If Bapurao can do it, you can do it too. He's a very near dear guy to me, and I really, really love him, the way he did that. Now his product might be different. You might have a different product, but these things can be done very easily if you have a global scalability factor and if you can dominate your local market well, and if you understand your
product well, right? Fundability is not a big deal, but there you have to understand how you can manage your fund. Many of the cases when you scale up, usually companies lost in path. When you do export, when you sell outside, there are couple of cells, couple of taxations, couple of structure, which people sometimes don't understand, which is completely fine. I mean, a good CA might be a good help. Sometimes, okay, to talk about myself, usually every year, I took sessions of multiple chartered accountants in India. हैदराबाद में वो सेशन होता है, मैं जाता हूँ और कुछ 100 के ऊपर सीए को मैं सिखाता हूँ. लेटेस्ट जो स्ट्रक्चर है, कैसे आप प्रोजेक्शन कर सकते हो, स्मार्ट स्टार्टअप के लिए कैसे आप बना सकते हो स्मार्ट पिच डेक वगैरह वगैरह, है ना. सो देयर आर फैक्टर्स विच यू कैन टेक. अभी थोड़ा की पॉइंट देते हैं, ठीक है. की पॉइंट के अंदर क्या आता है, पहले मैं एक लाइन बताना चाहता हूं आप लोगों को. यू माइट थिंक दैट एक कूल आइडिया होगा, ऐप होगा तो उसमें फंडिंग आसान हो जाता है. ऐसा कोई बात नहीं, राइट. From the investor's perspective, we love boring, disciplined execution. Boring means from third person perspective, जब आप काम कर रहे हो ना, वो काम कोई अगर देखेगा पूरा दिन, they might think that यार ये क्या कर रहा है, सेम चीज he is doing, same common, maybe same common dosa he is making, right? Same execution these guys are doing from day and night. But with a very disciplined execution, if a person can do the same job with perfection every month, every year, every single day, right? We love those kind of business. This looks non-cozy, non-luxurious, but sales follow it. Customer support comes. Your cost control becomes important over there. Now you have control in your entire business, right? And you have a process. So we love such kind of business, right? So before you create a fundable one, try to take the note of these 10 slides. जब भी आप फाइनेंस मैनेज करने जाओगे, आपका इनकम और आपका एक्सपेंडिचर, आई एम श्योर यू गाइस आर मैनेजिंग इट, right? But then within that, can you see that within your company, do you have a woman co-founder? If yes, did you diluted maybe 40% more of your business with that woman co-founder? If yes, there is a high chance of getting grants from the government. Do you know that? Can you apply a incubation center inside probably incubation center within government college? Have you ever tried that? There are multiple options. Even if you look at premium institutions like NITs, in some of the NITs, so I'm a mentor to a lot of IIT and NIT and IIM. There are some of the NITs who are allowing outsiders as a business to come and get incubation support inside their campus, right? Have you ever tried that? If not, try to take a note of these 10 points, how you can make a fundable, structured slide deck, right? This usually creates easiest way to understand your business to them. This is not for you to understand your business. This is for them to understand your business, right? Now, making a business fundable, it depends case to case. I'll open the floor for everyone. You can talk about their business. I was speaking for, I think, last couple of hours. It's been an hour, I think more than an hour. So happy to get your questions. Want to have it as much as interactive as possible. Didn't check the chat bot yet. Let me check the chat box. And if there is a question, I'll request letter of interest. Yeah. हिंदी इंग्लिश थोड़ा समझा दिए भाई आप लोगों के लिए जितना हो सकता था. But then I'll request the organizer to
If they have the option to go for a Q&A session, I'll be happy to take questions. Questions we can take now. आपको किसी को अगर सवाल पूछना है तो हैंड रेज कर लीजिए, नहीं तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए. मतलब सर सेम काम नहीं करना है, सेम काम ही करना है, लेकिन थोड़ा प्रोसेस ओरिएंटेड काम करना है. अब तक जो समझा है इसमें आपको ये समझ में आया? सेम काम नहीं करना है, सेम काम ही करना है, बोरिंग काम करना है, लेकिन थोड़ा प्रोसेस ओरिएंटेड होकर काम करना है. आई सेड वी लव बोरिंग बिजनेस, मीनिंग जो दिखने में लगे कि भाई एक ही काम हो रहा है बार बार, विच इज फाइन, वी लव इट. हम पहले There was समझेंगे one आपका question बिजनेस in क्या the है. back हाँ, chat box में, getting some government project is good for traction or not. That's yes, getting some government project is very good for traction. Yes, always. Challenge is if you are getting a government job, government pays late, but they pays. They can't say no to your income. So if you got some kind of government tender or order, it's always an interesting proposition for investment proposition. I'm sorry, what? It's a question. In our company, the stake of women is 90. Is there any special advantage? 100%, of course. If you have woman strength more than 90% in your organization, which means you are a woman-led business, oh my God, why didn't you go for multiple number of government schemes then? You are entitled to get several different advantage from the government. From where you are coming? I forgot your name. Dr. Prashant. Are you near southern part of India or northern part? The nearby nodal Hyderabad. office. Sorry? Hyderabad. Hyderabad. Oh. The nearby nodal office is the key. You can always connect. If not, maybe I will talk to Dr. Matthew and we'll discuss with each other. There is a process and you can always apply. 100% is the advantage. So another question is, angel funding helps us to get more future funding even in pre-revenue stage. Ujjwal Barua, angel funding usually comes, at least from my understanding of last 20 plus years of angel investing or running a VC fund. Angel investing usually is interesting when you have an interesting product, you are in MVP stage, you are good to go in the market, but then you are lack of money, but the market is there, right? Yes, many a times, 90% cases, if you get an angel investor who is a prominent figure in the market, people know him by name, by face, at least industry know him, not a TV celebrity, at least industry know him or her, then getting next round of funding becomes much more easier. And they usually, like, people who are there in the market for quite a long time, they usually bring more and more investor into the pipeline. सर ग्लोबल इन्वेस्टर्स लुक फॉर लोकल, इसका एक छोटा सा फॉर्म बताइए, इसका क्या मतलब है? समझा नहीं, क्या बोला? आपका वॉइस सुनाई सर नहीं दे ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स लुक फॉर लोकल डिपार्ट. Just she's writing from the previous PPT, I guess. Global investment for local, इसका मतलब क्या है वो पूछ रहे हैं. अच्छा, सो आसानी से समझाते हैं आपको. अभी भारत में बहुत सारे आउट ऑफ इंडिया इन्वेस्टर्स आके भारत में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? जी सर. उसमें एडवांटेज क्या होता है? इफ यू हैव अ स्केलेबल बिजनेस एंड दैट ग्लोबल इन्वेस्टर कैन सी इट दैट यू आर स्केलेबल, मतलब आपको बड़ा बनाया जा सकता है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट पाना और लेना बहुत आसान हो जाता है. मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ. ऐसे
सिर्फ पीपीटी से बोलने से कोई फायदा नहीं है. वन ऑफ माय गुड जी पोर्टफोलियो, हिज नेम इज अभिषेक. अभिषेक इज फ्रॉम जी बिहार. ठीक है. उसने जी रोबोटिक्स ट्रेनिंग का एक बिजनेस चालू किया था कुछ अराउंड 7 साल पहले, है ना. 15,000 रुपए उसके पास सीड कैपिटल था. आज के जी तारीख में वन ऑफ द आईआईटीएन जो मेटा में काम करने के लिए बाहर चले गए थे, वो मेटा छोड़ के देश में आ चुके, एंड बोथ ऑफ देम गॉट इन टच विद ईच अदर. दैट फेलो, मतलब वो जी मेटा का जो आदमी है, वो वाइस प्रेसिडेंट रहा था कभी, उसने अभिषेक का बिजनेस में इन्वेस्ट किया. मतलब जो जी बाहर का जो आदमी है, बाहर रह चुका है, दुनिया देख चुका है, लगभग यूएस देख चुका है, दुनिया नहीं बोलते हैं, they are now जी coming up in India and they are investing heavily in Indian startup. इसका वो मतलब था. Sir, what is the right time to approach to VC as early startup? If you are in growth stage, if you are in scalable stage, if you are in a stage where you have a big market, you have tapped it, but with lack of money is there, the timing is right, and you want to raise capital, then this is the right time to approach a VC. We also run a venture capital fund based out of Houston. It's called 1836 Ventures. आप लोग देख सकते हो गूगल टूगल करके, या फिर मेरा नाम लेके गूगल करो, you will see that fund. So the right time would be when you are in scale up stage. So VCs are more for MVP towards market. ये भी हो सकता है. Angel can be from the beginning, जहां पे आप एकदम मार्केट में उतर रहे हो, उतर चुके हो. वीसी ये भी हो सकता है व्हेन यू आर इन स्केल अप स्टेज. वीसी ये भी हो सकता है जब आप सीरीज ए में गए हो, या फिर आप ऑलरेडी, आपके पास बहुत ज्यादा मार्केट है, कस्टमर है, लेकिन वही बिजनेस आपको और बड़ा करना है, स्केलेबल करना है. एक जगह से आप 5 जगह जाना चाहते हो, और बहुत कम समय के अंदर, मीनिंग यू वांट टू squeeze your timeline. For an example, you are running it for 1 year or maybe 9 months, and your turnover is now maybe just hypothetical case, maybe 20 lakhs, and you want to tap 1 crore within a time span of 2 years, and you cannot do it without the external investment, then that is the right time for you to go for the VC fund. But VC-able business is structurally different. Local youth group मच्छी पकड़ give me इच्छा है. Can the organizer read this? Someone from SY. Yeah. Read So this. he's asking local youth group. They are like fish pakad ke. They are selling it. There are 15 youths. So how they can bring into the process of business? That's what I guess the question is. Okay. It's a long answer, to be very honest. What do you want to do? You want to deliver the raw fish to more markets, or you want to go for a processed fish mechanism? If it is a processed fish, then sun dry is one of the way, which takes a lot of time with salt and other mechanism. If it is not sun dry, if it is with machines, then there is another approach of doing it. If it is with machine, I'm not sure about your locality, but there are certain number of center of excellence. You have to have a body. You cannot do it alone, to be very honest. You have to have a body of maybe a consortium of similar kind of business coming together, and you have to approach that center of excellence to give you access to the fish dry mechanism process. Once you get that, then you have to go for packaging. So there are 2-3 different steps that you have to go through. But that I will take probably 1-to-1 if you want to know that. It's a long answer. I have learning center in Lonavala. We provide professional educational courses and also in training making handmade products. Everything is well organized, but my question is, should I focus on training center or Training product or center. both? What's your strength? If it is training only, then focus on training only. If you feel that you want to diversify,
go with product and then want to sell that in the market, go for both. Not a problem on that. I mean, if your product pipeline is so good and there is a market demand, usually student made products might not be well accepted in the market. If it is well accepted, go for it. Why don't you try with some of the online stores? Maybe list some of your products, try to sell it over there. When you're convinced, then probably you can go for full-fledged product marketing. Next is Jayakaran. Competition is high and the market share is very low. Without investment, we cannot make focused marketing. Our product is stationery and crafts made from recycled paper. Our target is a very limited number of consumers at present, as recycled paper products that are handmade and are more expensive than regular stationery. So maybe comment from the previous. Yeah, this is a big challenge. This one I is, also have a question after that. If you please cover that also. Thank you. sure. I have less confidence in attracting investment. Please advise. Yeah, this is a big challenge. So if we look at the market at the moment, recycled paper product, and that is also handmade one, usually costly. Okay, has to be. Market for that, I'm not sure is that big or not. It might happen. You can probably go through the processes where you can opt for maybe artisan's tag. I'm not sure if you have got that or not. There are opportunities from government grant. You can probably send your products, or you go to outside market from your comfort zone and then put up a stall and then try to sell it. That's the only option. And there are programs under COP, if you have heard about COP, COP, COP 30 is there, and then probably COP 30, 32 will continue. If you go through these process, go through these platforms exactly, there might be an option that you can get some good vibration. But getting investment in such kind of product is very difficult. Let me be very honest with you. Unless you are really solving a real life problem, you are doing it. Probably you are picking up some paper and then creating recycled product. I don't know about the product details, so can't comment on the basis of just a text. If the product is sustainable for maybe a year or two, there might be a different approach which you can take. So your product pipeline might be different than what you are making. So I'm not sure about your full details of your product. Until I know that, can't give you the right kind of answer. The next is same, which it got repeated, I guess. Lonavala Center. Then it's stockbroker company, like where around 20 members handle stocks of multiple individuals and entire industry is profitable. Question. What is the question? It's just written like that. If Karthik can ask. Yeah, so like this is a very Unmute common that. thing. There is nothing rocket science in that. There are multiple stock market consoles are there in the market. They are either profitable always. The consoles are always profitable. So maybe you can think of something which is not sticking to one console only. You can probably run it on the basis of creating more and more console stock market brokerage firm, maybe different areas. As I was shouting in my presentation, if you have covered already 100 kilometers of your radius, why didn't you start another stock market console maybe after 100 kilometer and then start from over there, make it as a branch one by one. That's a scalable factor. If it is 100% profitable, then why don't you do that? That will be my only suggestion. Okay. The next is Sumit. As a startup founder needs a small amount of salary. As founders sustain salary, we can't take salary from government or private funds.
So no revenue. We are in R&D prototype hardware manufacturing. So how we can take salary for founder or any other way by your experience? What the suggestion? Is it a private limited one? I don't to understand the company structure. If Jamil can unmute and speak. Simple answer, if you are acting as a salesperson in your company, or I don't know about your role in your company, apart from being a founder, if you run it as a private limited, you are running it as a um, passion, but then at the same time, you're taking care of maybe the entire marketing, or maybe you're taking care of sales, you're maybe taking care of process, then put yourself inside the company as one of the, of course, if has to be a private limited, put as one of the director and drag a director's salary from there. If you don't have a private limited, if it is a LLP, same thing you can do. If none of this, it's a proprietorship one, then it's not a company, it's a proprietorship firm. There you can always take your own salary, showing yourself as a marketing person inside the company itself. Yeah. And if it is running for more than 5 years and you're in the same situation, there is serious wrong in your business. Then you have to come to me to get a proper professional consultancy. We are manufacturing eco-friendly herbal sanitary napkins. We are having so many orders, but we are not having sufficient funds. All are tribal from Vishakhapatnam. I applied for bank loan. They are asking collateral. Suggest. Yeah. Which bank? I don't know. How you have approached that also I don't know. This is a mere severe real life problem, rightly opted by you. But I know there are multiple different cases where collateral is not required. I'm not sure if you have been through entire banking procedure online or not. I will request you to read it carefully. If you need professional help, I'll be happy to help professionally to get some maybe support from the bank itself. There is a process. If it is running from tribal women's perspective, there is a process. You can go through it. It takes time. If it is without collateral, definitely bank will cross-check, verify, due diligence. So on the platform, on the podium, bankers might say it takes 6 months. It doesn't take 6 months. It takes more than that. But then fundings are there. It is available. I've seen things are happening. Did that. If you need my help, happy to support. Maybe I'll talk to Matthew to maybe make it as a process. We can do that always. Institute owner from Uttarakhand, and I am running from last 5 years. I have 3 branches. Sorry, walks of Himalayan, but okay. And I'm getting good reviews on. What suggestion shall I give you? Yes, this is a very common thing. When you grow, your product is doing very, very well, but then at the same time, you don't have proper management. Get some management guy in your team. That's the only thing that I can tell you. If that is not available in Himachal, well, I have been to Himachal several times. Which part of Himachal you are from? Products looks very interesting to me. In fact, I was there in places like Roru, Narkanda, Chitkul, almost entire Himachal. So from your industry department, I was called as one of the external advisor. So been through your entire state. So need to understand more. Happy to guide after that. In this generic question, I don't understand your pain point. You need to make sure you're talking about your pain point specifically. If you say I have a management problem, what problem? I don't know. So you need to share that. Oh, you're from Uttarakhand. Okay. Which question has been skipped? Please tell me. Can we? Yeah, mine is women-led candle making business. In the eyes of investors and financial institutions, is candle making treated as a commodity business or a brand-led consumer product? It's the It first. is. And what factors decide this? Then, do investors generally invest in candle business, or do they see it as low margin and easily replicable?
what makes a candle brand investor ready? This was the question. Brilliant question. I'm so happy that you're asking me this question. Well, first answer, this is a non-interesting business for anyone if it is a simple candle making business. Second answer, if you're making candles like with good aroma or you are tweaking your candle business into a segment that this will bring good vibe to your family and Vastu wise is going to give you good luck, right? Then it becomes a sellable product and a interesting product in the market itself. Now, how you can do that is pretty easy to do. Get some of the influencers who are influencers into Vastu Shastra, right? Try to get one of them into your ecosystem, have a partnership, collaborate, or whatever way you want to do that, do that. If not, happy to help. We have influencers market, that's not a big deal. But this is the only way you should put your candles as a luxury candle item. It cannot be like a normal stick like this and then you say that I'm into candle business for so many years. No, it can be various different shapes as well. Example, you can probably go with laughing Buddha shaped candle and then you're selling it by making a statement and you put some aroma inside that. So when it burns, it gives a very good smell and aroma inside your room and you put it as a premium price. So as I said, you remember I was talking about where you are selling and when you are selling is the main key factor, right? So probably you're selling your candles in the local market. Don't sell it in the local market. Go for a luxury market. Go for premium pricing. So go for two different product pipeline. One, your common normal candle that you're making. Don't stop it. Run it. At the same time, create those luxury candles which will be completely premium. Go for tagline like handmade. Put it some kind of medicinal plants inside that. You can probably use, I'm not sure if you have tried it or not, you can use aloe vera candles. You can use probably Grit Kumar, I forgot the exact English name. Go for that, those kind of, medicinal plants candle itself, and then put it in the luxury item space in the segment of your business. Don't undersell it and get influencer marketing, digital marketing, jump it, and then you will see the result. I'm sorry, I didn't saw that text. Sorry for late answer. Sports supplement band. 3-in-1 kit product solves grassroots level athletes in pre-match, during the post-match with to organize the essential nutrition in real time. Okay, good idea. But then I'm sure that if you're creating a sports supplement, you know what are the consequences in sports. I'm not sure which sports you're talking about. Is it gymnastic? Is it football? Is it martial arts? Is it badminton? Sir, actually, I'm the one who posted that question. Sir, actually, we are solving for the high intensity sports like football, cricket, tennis, and all the sports. So we are coming with the sachet, sir. So basically, we are making in a gel form, like semi-liquid of 2-in-1 concept. Already, we have been developed one formulation with the infusion with natural watermelon flavor. So we are doing with the technically you can mix with the water and you can also directly consume. So that concept we are making. So you got the facile license, you got this. Yeah, we are in the process of getting the license and also we are also processing making the patent as well. Right, very good. So what's your question? Yeah, that's what, sir. My question is how I need to tap right way in the digital marketing. I want to know that. In especially in the go-to-market strategy because I feel my product somewhere it's a premium somewhere I can give for the lower price for the product brand visibility. It's a bit confusing, but I want to have a clarity from What's you. your budget for digital marketing? Depends on that. The easiest way is get some brand ambassador. And if they are talking about your brand, and second option is go for a collaboration with the football clubs in our country. So there are multiple district clubs. If I look Okay. at India on the sports level, so I'm not sure if you've heard about Khelo India or not. Yeah. The guy is a very good friend of mine. Yeah. So we are friends for, I think, I forgot the number of years. But then the little I understand about athletics and sports, which is more of like
helping them directly, and then giving them, yes, you are right, performance during the sports time. Main challenge comes that which one they should consume is referred by the coach itself. It's not referred by the club, right? Yeah. And the coaches are highly influenced by their seniors and some nodal body. Mhm. So whatever goes on with a decision-making process from the top-down approach. So best option for the digital marketing would be getting an influencer for your brand. Don't get someone with a lot of followers. It Yeah. doesn't make sense. Yeah, absolutely, sir. You're right. Yeah, And but also, then sir, we are thinking to make the model like this. We have just a concept we haven't implemented still. We want to make the coaches as the primary influencers, where we want to give like 5% of the margin on every monthly or quarterly sale. So that concept works? that works, but then that stops after a level because somebody else will come and they will probably offer 10% more. Okay. Okay. So the best option is actually go for a huge amount of creating ecosystem of your own. Okay. So I need to understand your budget, need to understand your target state or area first. Yeah. Okay. Then I can suggest better. As a Okay. common answer, I can only now tell you is like, see, I do it very professionally. So I cannot give you exact answer in a open platform like this. I'm so sorry. Yeah, I'm yeah, being I straight. understood, sir, because Yeah. it's not easy for Yeah. everyone to Yeah. understand the things. It takes time. No, it doesn't take time. I said I don't answer that for free in a Okay, open I platform got like it. this. Yeah, I got it, sir. Hope Yeah. you're Yeah, I got it, sir. Absolutely. You're true. You're true. yeah. So if you talk about understanding, I mean, thanks for this line. So let me give you a little bit of idea who I am from sports industry. Have you heard about Steve Waugh? Yeah, yes, sir. Steve Walk, yeah. God, you heard about him, right? Yeah, I heard about So I'm it. the guy who actually made him popular in some parts of the world. Okay, Have okay. you heard about Craig Johnston? Yeah, yes, Past I have. Australian. Yeah. So Craig Johnston is a old chap now. He's a past World Cup football player who created. He has got patent for Reebok shoes. If you, Okay, okay. yeah. So I'm not sure if you know Craig Johnston well or not. So I'm the guy who actually did a little bit of help to that gentleman, that chap. And if we talk about exact Bengal, there are two football clubs which is running at least in this town. I'm advisor over there. So I understand two cents of at least sports marketing. Uh, Yeah. but then I do it very professionally. That's why I asked you that what is your budget? So Okay, depending okay, on the okay. budget, probably you can go for upcoming sports personality in maybe football, which will be less costly for you. Taking care of their entire medicine or taking care of that particular person for next 6 months would be a good brand building for you, and that goes on a brand building scale. And then there are segments where you have to go for a B2B collaboration. Example, if you look at so there is another startup called Amusi Sports, wherein I'm a advisor over there. This is working on mostly on couple of very non-conventional sports in our country. Example, pickleball. They had a collaboration with DD Sports as well. So there are certain segments where you can probably collaborate with such kind of business deals, and your sales mechanism must have a reward mechanism, not a 5% dilution with the coach itself. Okay. Reward mechanism comes in a complete different way altogether. Okay. Okay, okay, sir. Yeah. Sir, can we get your email or something? We can approach you personally, Do like. you have a Chrome browser in front of you, my dear, or Yeah. any browser? Can you put Okay. my name in Google, please? Okay, okay, sir. Definitely, I'll do that. Very easy to get me in social Yeah. media. Okay, 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 sir. Okay, sir. But for everyone's sake, I'm giving my Insta. This is my Insta. And if you need my coordinates like my mail ID, this is my mail ID. This is for everyone. But I only respond when it is coming from YESummit, and that too from the filtered of my friend Matthew. That's how I always work.
So requesting everyone, if they are sending me mail, kindly mark a CC to the organizer so that they are also in the loop. Next question, please. Deep Roy, if you can, like, it's a big question. If you can ask directly, if he's still there in the meeting, because I see there are people leaving. So his question is, I'm the founder of Byron Solutions Private Limited. We are into manufacturing, where we are creating sustainable building materials from solid waste management. We have a prototype and also getting interested customers. Our current stage is that we are working on the final design for market entry with research guidance from IIT Patna. Creating a manufacturing unit is capital intensive, around 30 lakhs. To tackle this shortage of funds, we are in research pilot of 10 lakhs to finalize product and confirm pre-order and take advance. How can we attract more collaborations for land, funds, and demographic support? Well, if you are already in touch with IIT Patna, they are one of the best solution giver inside maybe in your network. Sudeep, I can see your video. And if you are already incubated by IIT Patna, nothing like it. It's great. If not, if you're not getting that incubation support, in Bihar, there are multiple number of Bihar government schemes. So I'm not sure if you have been through those schemes or not. I was there in Bihar through IIM Calcutta Innovation Park some years back, I think 2, 3 years back. And personally, I allowed up to 5 crores fund to grassroots level people as well. So I'm not giving you a hypothetical answer, right? So through the government office, I think you should opt to, I'm not sure if you have been through the MSME department or not. The present person is a very, very helpful one. I think you should opt for it. If not, help me with your document and your details. My mail ID is already there. Kindly mark a CC to YESummit so that the process goes on. And I'll see that if we can do something to help you get some support. Yeah. But good work, good work. At least you have done something till date. Very good. शेफ मसाले क्या करूं मैं जान के Yeah, he raised a hand. आप सवाल पूछ सकते हैं. In millet based snacks category, pre-launch stage, how you, oh my God, this is Ujjwal Barua. Great. Like millet, if you talk about, there is a huge demand in the corporate stage. I'm not sure if you have heard about multiple number of factory owners now looking for millet-based food to give to their labor. Because when they consume today's polished rice and today's roti, unfortunately, that's very, very unhealthy. It is giving them bloating. So if you are producing such kind of product, right now I can tell you one company, Anup Agarwal, he runs an organization. It's around 500 crore plus turnover company based out of Bengal itself. Real life example, they are looking for millet-based food to give to their labor. And many such factories are there. So if you have large quantity or if you have produced it, happy to connect you with some of them. Okay, D2C, yes, possible. Is it investable? Depends how you scale up, how you make your company structured for the funding. If it is proper structured, funding wouldn't be a big challenge. And as you said, you have product and you probably have customer, I'm not sure, then definitely it is possible. Ma'am, sorry, you are saying something. I cut you in between. No, the same question. And then Santosh, if you want to ask question, can unmute or write it in chat box. Because he raised the hands and then low. So I can't see any more questions right now. You can conclude because We are right on time, 6:30. yes, 6:30. तो मैथु जी हमको कॉफी ही पिलाएंगे, डांटेंगे नहीं.
अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहा, माई इजिएस्ट एक्सेस इज माई इंस्टाग्राम. Again, this is my Insta, ARIJITIN. You will probably find my picture. Oops. No, this is just a form link. I'll talk about that. You can write the. Okay. Hello. Hello. Hi. Hi. Paramati. Hello. Yes. Yeah, Boli na. I need PP already 3 days onwards. We are asking that. Vidyak we need, ma'am, for the making of further rounds. We are understanding properly, no? Vidyak, what's are presented, no? Yeah, that Presentation. will share ma'am into the group at the end of the boot camp. Don't worry Okay, about it. that's The fine. pitch deck That's will fine. share. Yeah. Yeah, that's fine. Thank you. Okay. So may I take a formal leave now and Yes, maybe thank you so much. And it was really fruitful session. And I like Yes, everyone to yes. get connected with Thank you. you if they have any questions or any guidance from you, and then they can write us and you as well. So the major what the pitch decks also you talked about reaching out to the correct customer, and also about setting up the goal and ethical backbone. That's what the important thing, which I guess the important part of the whole session, what I understood. And thank you so much for coming in and guiding all the participants. Thank you. Group Can- photo. Group photo. Ella. If please on the video for some time, we'll take a group photo for today's session. ఎవడో పండగడా ఎవడో కటకడ ఆ తర్వాత ఎవడో చిన్నగడా Done. Yes, it's done. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Feedback